Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about ratio analysis. Ratio analysis is a tool that helps us to interpret the financial statements in terms of operating performance and financial health of a firm. ये एक हमारे हाथ के अंदर टूल है जिसके ज़रिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं in terms of operating performance and the financial health of a firm. Ratio analysis provides us solution. It makes comparison and meaningful interpretation of financial statements. हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये उनके अंदर मीनिंगफुल कंपैरिजन करके हमें उन स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करने के अंदर मदद करता है, विच इन टर्न प्लेज ए वाइटल रोल इन बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस. इसके ज़रिए हम बिजनेस के प्लानिंग प्रोसेस को अच्छी तरह से कर सकते हैं. It involves comparing the ratio with similar firms in the industry or analyzing the trend in the same company over a period of time. However, a single ratio is not sufficient to judge the financial position of the company. कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए सिर्फ एक ही सिंगल रेशियो काफ़ी नहीं है. Therefore, several ratios are used together to compare with previous year ratios or even with other companies in the same industry. Financial ratios. Financial ratios can be divided into four parts. The first one is liquidity ratio. Second, profitability ratio. The third one is turnover ratios. And the last one is solvency or other ratios. Liquidity ratios को हम तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं: करंट, क्विक एंड कैश रेशियोज. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं: इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट एंड इन रिलेशन टू सेल्स. इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट को फर्दर तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है. द फर्स्ट वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द सेकेंड वन इज रिटर्न ऑन इक्विटी, and the third one is return on capital employed. Similarly, in relation to sales, we can divide it into three categories. The first one is gross profit ratio, the second one net profit ratio, and the third one is operating profit ratio. टर्नओवर रेशियोज के अंदर हमारे पास चार तरह की रेशियोज हैं: क्रेडिटर्स रेशियो, डेटर्स रेशियो, इन्वेंट्री रेशियो एंड फिक्स असेट्स ratio. Solvency and other ratios के केस के अंदर we have got four types of ratios. The first one is debt equity ratio. Second one, interest coverage ratio. The third one, EPS, earning per share. And the last one is profit earning ratio. स्टूडेंट, मैं यहीं पर एक बात क्लियर कर देता हूँ. ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और रेशियो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम ज़्यादातर इन्हीं रेशियोज़ को यूज़ करते हैं. आइएगा इनके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन को टेकअप करते हैं. सो वी हैव मेनली फोर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियो. वन इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, द थर्ड वन इज टर्नओवर रेशियो, एंड द फोर्थ वन इज सॉल्वेंसी और अदर रेशियोज़. इन चारों रेशियोज के बारे में हम कुछ स्टडी करेंगे. फोर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियो. द फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियोज. इट क्वांटिफाइज वेदर द कंपनी वुड बी एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस आर नॉट. द सेकेंड वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. इट मेजर्स फर्म्स ऑपरेटिंग कंपिटेंस, दैट इज how well it utilizes the available resources in order to generate profit.
प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए क्या ये कंपनी अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज कर रही है या नहीं कर रही। द थर्ड वन इज टर्नओवर रेशियो। It indicates the firm's efficiency with respect to its assets management. The fourth one is solvency ratio. It measures the extent of a company's debt to its equity. इन सभी चारों रेशियोज के बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। Liquidity ratio. We have current ratio. Second, we have quick ratio, and the third one is we have cash ratio. Let's talk about these three ratios now. Current ratio, it measures the short-term solvency of the company. Also known as working capital ratio, it tells whether the firm has sufficient funds to pay its liabilities over the period of next 12 months or not. करंट रेशियो को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सेकंड, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो कंसीडर्स whether the very liquid assets are available to meet the obligations or not. Very liquid assets means whether it can be converted into cash immediately or not. क्विक रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है क्विक असेट्स विच इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स आर कैश प्लस डेटर्स। The third one is cash ratio. It considers only the most liquid short-term assets of the company, which are those that can be most easily used to pay off existing commitments. Cash ratio is equal to cash divided by current liabilities. Now the second one is profitability ratios. These ratios measure the ability of the company to earn sufficient profits. These ratios are used to measure the cost relative to sales and the profit generated in the overall business. It can be divided into two parts, in relation to investment and in relation to sales. So profitability ratios पहले हम बात करेंगे in relation to investment. The first one is return on investment, ROI. The second one is return on equity, ROE. And the third one is return on capital employed. Return on investment. It is a performance measure which evaluates the efficiency of an investment. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को जानने के लिए हम नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स को लेके उसको डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट्स के साथ। सेकंड इज रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी डिस्क्लोजेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ए फर्म मेड कंपेयर टू द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स equity. And the last in this category is return on capital employed. It measures the return a firm gets out of total capital employed by the company. Return on capital employed is equal to earning before interest and tax divided by capital employed. EBIT, it refers to earning before interest and taxes. That is net profit plus non-operating expenses. Capital employed is equals to total assets minus current liabilities. Now, profitability ratios in relation to sales. The first one is gross profit ratio. The second one is net profit ratio. And the third one is
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सो इन रिलेशन टू सेल्स हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज 3 तरह की हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, it is the difference between sales and the direct cost of making a product. The increase in gross profit ratio shows that either the company has increased its sale price or has controlled the direct cost involved in the production of the goods. Gross profit ratio is equal to sales minus cost of goods sold divided by sales multiplied by 100. Or it can be expressed as gross profit ratio is equal to gross profit divided by sales multiplied by 100. Net profit ratio, it indicates the overall profitability of the company. There is a possibility that a company may have very strong gross profit margins, but it may have high non-operating expenses such as interest expense, which results into very low net profits. Net profit ratio is equal to gross profit minus operating and non-operating expenses divided by sales multiplied by 100. It can be presented like this. Net profit ratio is equal to net profit divided by sales multiplied by 100. The third one is operating profits margin ratio. This ratio specifies how much profit a firm makes after paying for variable cost of production such as wages, raw materials, etc., but before interest and tax. Operating profit margin is equal to EBIT, earning before interest and taxes, divided by net sales multiplied by 100. Now the turnover ratios can be divided into 4 parts. The first one is inventory turnover ratio, second, debtor turnover ratio, the third one is creditor turnover ratio, and the fourth and the last one is assets turnover ratio. Let's have some more information about these ratios. Creditor turnover ratio. Creditor turnover ratio evaluates how quickly the business pays off its creditors, suppliers in a particular period. हम कितनी तेजी के साथ अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट को कर सकते हैं. Creditor turnover ratio is equal to total purchases divided by average creditors. The second one is debtor turnover ratio. It shows how quickly a firm collects outstanding cash from its customers, debtors in an accounting period. हम अपने कस्टमर से, डेटर से, जो लोग हमारे देनदार हैं, उनसे कितनी जल्दी कैश को कलेक्ट कर सकते हैं. Debtor turnover ratio is equal to credit sales divided by sundry debtors. The third one is inventory turnover ratio. It indicates the number of times inventory has been converted into sales in a particular period of time. Inventory turnover ratio is calculated as cost of goods sold divided by inventory. The last one in this category is fixed assets turnover ratio. Fixed assets turnover ratio is used to determine the efficiency of an organization in utilizing its fixed assets for the purpose of generating revenues. This ratio is equals to net sales divided by fixed assets. Now in the last we have solvency and other ratios. We can put them into 4 categories: debt equity ratio, interest coverage ratio, earning per share ratio, profit earning ratio, PE ratio. Debt to equity ratio. It indicates proportion of funds borrowed by a company to the equity capital to run its operations. Financial lenders prefer a low debt to equity ratio before considering to give any debt to the company. पैसा उधार देने वाले बैंक प्रेफर करते हैं उन कंपनीज को जिनकी लो डेट इक्विटी रेशियो है. Higher the ratio,
greater is the risk related with the firm's operations. Debt to equity ratio is equals to total debts divided by shareholders' funds. Interest coverage ratio. The interest coverage ratio is used to determine the solvency of the company to pay interest on borrowed capital. क्या ये कंपनी अपनी borrowed capital के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट को इजीली कर सकती है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस. EPS, earning per share. This ratio helps in measuring the profit that is available to the equity shareholder on a per share basis. EPS is equals to earning after tax minus preferred dividend divided by equity shares outstanding. And the last one is profit earning ratio, PE ratio. It signifies the expectation of the investor for the stock. A PE ratio greater than 15 has historically been considered high. PE ratio is equals to market price of share divided by earning per share. स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर आपने बहुत सारी रेशियोज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करी और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली हमारे पास 4 तरह की रेशियोज़ हैं, लेकिन इन 4 तरह की रेशियोज़ के अंदर नीचे बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं. यहाँ पर एक फैक्ट को बिल्कुल क्लियरली मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ. सिर्फ इतनी रेशियोज़ ही हमें अवेलेबल नहीं है. देयर आर मोर रेशियोज़ विच आर अवेलेबल, लेकिन इन रेशियोज़ को हम प्रैक्टिकली ज़्यादातर कंपनीज के अंदर यूज़ करते हैं. इसके बियॉन्ड भी कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज स्पेसिफिक पर्पस से एनालाइज करती है. मैं समझता हूँ कि इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में ये जानकारी मिल गई होगी, लेकिन यहाँ पर हमने कोई प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट नहीं किया है. I hope that this can give you an overview of financial ratios. Thank you very much.